जय हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब इस चैप्टर की रील ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, एसिड्स एसिड्स बेसिस सॉल्ट एंड वाटर, ये क्लास 10th का चैप्टर है। 10th सीबीएसई भी है और 10th आईसीएसई भी है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीबीएसई के लिए ज़्यादा होंगे, लेकिन उसका कोई इशू ना रखा जाए। पूरा चैप्टर है जिसमें फाइनर डिटेल्स पे हमने काम किया है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। Acids is a term derived from Latin word called acidus. Acidus means sour, which is found in fruits. Bases are those compounds, if they are caustic, they are bitter. They are made from metal oxides and metal hydroxides, like copper oxide is a metal oxide. Sodium oxide is a metal oxide. When copper oxide dissolved in water, it might as well convert to, although it is not soluble, copper hydroxide. But this is highly soluble. So this will make sodium hydroxides. So metal oxides and metal hydroxides are basic in nature. Next we come to is, what are acids? Acids are compound which when dissolved in water, acids are compound which when dissolved in water yield hydronium ion, and this stands for aqueous. These are formed only when it is dissolving in water. Now what does the structure of hydronium ion look like? This is water molecule. In this you can see there are two electron pair which are non-bonded. Now the proton of acid combine with this water molecule like this, and the electron pair is contributed by oxygen, and the charge goes on complete species. So this is how hydronium ion looks like. बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन तीनों बातों के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे आगे। फिर कहीं है, फिर से देखें। नेम द सब्सटेंस, गिव वन वर्ड। कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड हाइड्रोनियम एज द ओनली पॉजिटिव आयन इज acid, and this is how the structure of hydronium ion look like. Next we have is, look at this. This is the structure of hydronium ion. This is bond pair. This is bond pair. This is bond pair. This is lone pair. This is coordinate bond. The lone pair is non-bonding electron pair, underlined pair of last shell, underlined last shell. Non-bonding electron pair of last shell is called lone pair. Covalent bond forms bond pair. So in this case you have two bond pair, oxygen hydrogen and oxygen hydrogen. Coordinate bond, this is coordinate bond. What does it look like? Bond formed when lone pair electron is contributed to only one atom, contributed to only one species, contributed to only one species. पूरा पूरा pair of electron convert होता है. Higher classes में you will understand that coordinate ultimately changes to covalent. Next we have is, what are bases? Bases are those compounds which when react with hydronium ion of acid like we made earlier, this is how hydronium ion is formed, to form salt and water. Now in this case, this is metal oxide which is dissolving. It is a simple case of double decomposition reaction. Metal oxide with acid gives salt and water.
Metal hydroxide also with acid give salt and water. Now there is a very strong difference between alkalis and bases. Alkalis are those compounds which when dissolved in water, KOH, NaOH, even KOH will dissolve in water. Potassium hydroxide in aqueous medium would make potassium ion and hydroxyl ion. So alkalis are those compounds which are highly soluble in water and they dissolve in water to yield hydroxyl as only negative ion. But same does not apply to definition of bases. Bases are those which combine with the hydronium ion of acid to give salt and water, but alkalis are those which when dissolved in water to give hydroxyl ion as only negative ion. In this case, it is not supposed to be soluble in water, but in this case, if you are addressing a metal compound as alkali, then it has to be soluble in water. Next we come to is all alkalis are bases. All alkalis look like bases, but all bases are not alkali. For example, copper hydroxide is a base, but it is not soluble. Aluminium hydroxide is basic. Zinc hydroxide is basic. But there are only these are only three examples of alkalis. One is potassium hydroxide solution. Second is sodium hydroxide solution. And third is ammonium hydroxide solution. एक क्वेश्चन इसमें 10th में बनता है, नेम एन alkali which does not have metal ion. Question is name an alkali which does not have metal ion. The answer is ammonium hydroxide. Let us talk about next. Now, this is a slide for classification of acids. Now, let us talk about this. Classification of acids is on the basis of source, on the basis of composition, on the basis of strength, on the basis of concentration, and also on the basis of basicity, which is the next one. You can see it is not mentioned here, on the basis of basicity. Now, looking at this, let us see, we keep the classification intact. On the basis of source, it can be organic. Organic is related to life. Plants have life. Dr. J.C. Bose, an Indian scientist. Even animals obviously have life. So, compound acids which are coming from life are called organic acid. For example, from vinegar you make acetic acid. Vinegar is acetic acid. It is made from sucrose, vinegar and acetic acid. The acid found in ant, red ant of Africa, Formica, so these are formic acid. If the source is inorganic, that is the mineral of the earth, like hydrogen, nitrogen and 3 atoms of oxygen would make nitric acid. Like 2 atoms of hydrogen, an atom of sulfur and 4 atoms of oxygen would make sulfuric acid. So on the basis of source, you have organic acid and mineral acid. Next we have is on the basis of molecular composition. On the basis of molecular composition. On the basis of molecular composition, they are hydra acid and oxy acid. You have hydrogen, nitrogen and also oxygen. Therefore, they are called oxy acid. But when you only have hydrogen and a non-metal, then you call it hydrochloric acid. So these are hydra acid. This is hydra acid. This is hydra acid. So when hydrogen with non-metal, it is hydra acid. When hydrogen with non-metal and oxygen, it is oxy acid. Next we have is on the basis of
strength, on the basis of strength. It can be strong, it can be weak. How do you decide the strength? Like, strong are those which when dissolved in water, all the molecule convert to ion. All the molecule convert to ion. Strong acids are those which completely ionize when dissolved in water. Underline, all the molecule convert to ion. That is complete ionization. And they undergo partial ionization. Weak acids undergo partial ionization. Like carbonic acid is a weak acid, sulfurous acid is a weak acid, and all the organic acids are weak acid. All the organic acids are weak acid. They undergo complete ionization, they undergo partial. हायर क्लास में इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कराएंगे, क्लास 11th, जिसमें आप Ka निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसका पीएच निकालेंगे. ये सब हायर क्लासेस का है. शायद सीबीएसई में पहले ही है, 10th में ही है. लेट अस सी. ऑन द बेसिस ऑफ concentration. Now, there is a term called mole. Mole is unit of chemical substance. If per liter it is greater than or equal to 1 mole of acid, it is concentrated. If it is less than 1 mole of acid per liter, then it is dilute. In some books it is written it contains higher concentration of hydrogen ion, and this has lower concentration of hydrogen ion, this has low concentration, and this has high concentration of hydrogen ion. Dilute acid has more hydrogen ion than next, because in this case water is more in respect to solute or acid. In this case solute or acid is less in comparison to the quantity of water. Next we come to is on the basis of basicity. Now what do you mean by basicity? Let us talk about basicity. Basicity stands for number of displaceable hydrogen ion per molecule of acid by basic radical. Now in this case, in sulfuric acid, each mole has 2 displaceable hydrogen ion. So this is basicity. In this case, phosphoric acid has 3 displaceable hydrogen ion, right? So number of displaceable hydrogen ion. So what is basicity? Number of displaceable hydrogen ion per molecule. Underline the term per molecule of acid. So in this case, basicity is 1. In this case, basicity is 2. In this case, basicity is 3. So sometimes the objective question comes, which among the following is a dibasic acid? Obviously sulfuric acid. Which among the following is a tribasic acid? It is phosphoric acid. Next we talk about is classification of bases. Now classification of bases is in terms of strength. It also depends on concentration in terms of acidity. Let us talk about strength. Strong acid, strong alkali or weak alkali? Strong alkali is completely dissociated, and this is partially. That is, not all the molecule convert to ion.
not all the molecule of alkali convert to ions. Convert to ions. Here, all the molecule, complete means all the molecule convert to ion. Example we can take, this is a, these two are strong alkali and this is a weak alkali. Remember, we are not talking about bases. We are talking about soluble bases. Soluble bases are called alkali. So alkalis are strong and alkalis are weak. Strong undergoes complete dissociation, weak undergoes partial. Next we have is, here we can see on the basis of concentration. Again, concentrated means greater than 1 mole per liter of it and it is less than 1 mole per liter of this. In this case, water is more with respect to alkali and here water is less in respect to alkali and water is more with respect to alkali. Next we have is acidity. Now, when we talk about acidity or acidity, you can see number of displaceable hydroxyl ion per molecule of alkali by acidic radical. So, acidity is 1. In calcium hydroxide, you have 2 displaceable hydroxyl ion. So the acidity is 2. In case of aluminium hydroxide, you have 3 displaceable hydroxyl ion. Therefore, acidity is 3. So what do you mean by acidity? Acidity is number of displaceable hydroxyl ion, number of displaceable hydroxyl ion per molecule of base. Per molecule of base by acidic radical. By acidic radical. Acidic radical. Next we have is, what is the concept of acid and bases? This is quite interesting. किसने क्या कहा? ये होता है, साइंस को हमेशा हाइपोथेटिकली देखा गया था. चाहे आर्किमिडीज हो जिसने बायंसी की बात करी, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे जितने भी डेमोक्रिटस हो, हेरोडोटस हो, जिन लोगों ने बहुत फिलोसॉफिकली सोचा, तो शुरुआत में कुछ लोगों ने काम किया. अरीनियस ने कहा कि वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होके H आयन दे वो एसिड है और जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करके OH आयन दे वो बेस है. लॉरी एंड ब्राउनस्टेड ने कहा कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेसिस. अब इसमें एक जो नया टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस फॉर क्लास 10, कॉन्जुगेट. कॉन्जुगल इज जोड़ा. मम्मी पापा, भाई बहन, गुरु चेला, टीचर स्टूडेंट. Conjugal is जोड़ा. Pair. Species differing by proton are called conjugate. If it's an acid, its conjugate will be base. If it's a base, its conjugate will be acidic. This we are going to talk in class 11th video, not here. It does not cover into the syllabus of class 10th. Next we come to is, how is hydronium ion formed? Let us see. When hydrogen chloride gas dissolved in water, chlorine take away the electron of hydrogen. It makes chloride ion. Now the proton comes towards oxygen because it is more electronegative. It has tendency to take away the electron. Now, more than oxygen. So, lone pair of oxygen is contributed here and the proton charge comes on the whole sphere. So,
Compound which when dissolved in water yield hydronium ion as only positive ion. And how is hydroxyl ion formed? This is ammonia molecule with a lone pair, which when dissolved in water, this electron is taken away by OH ion. So again, proton comes to the lone pair electron of ammonia, a nitrogen in ammonia, and this charge then goes to whole sphere, and this is coordinate bond. So ammonia, so remember, you need to draw the circle, that is gola, arrow, that is tir, then bracket, this is square bracket, and the charge. गोला तीर ब्रैकेट चार्ज, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. What is, draw the structure of hydronium ion, draw the structure of ammonium ion. Remember to make, again I am making, show the electron sharing. I will not do it here, it might get you confused. I will do it here. Show the electron of hydrogen, show the electron of hydrogen here, show the lone pair. The lone pair contributed to proton and the charge of proton on the whole sphere. So gola tir bracket charge. Remember this. Same for ammonium ion. Next we come to is preparation of acid. Suppose hydrogen react with chlorine in diffused UV light. It will give acidic gas. Suppose you dissolve non-metal oxide in water. It will make sulfurous acid. If you take sulfur trioxide, non-metal oxide, dissolved in water, it will make sulfuric acid. It can also be prepared from salt. You can take sodium chloride with concentrate sulfuric acid at a temperature less than 200. This is a salt. This is a salt. It will form sodium hydrogen sulfate with hydrogen chloride gas. Same way, even certain oxidizing agent can oxidize. Sulfur is a non-metal and this is concentrate nitric acid is oxidizing agent. This will give sulfuric acid, 6 mole of nitrogen dioxide and 2 mole of water. So see, this is an acid, this is an acidic gas, these are acid. So you can see hydrogen with non-metal, non-metal oxide dissolved in water, salt reacting with acid to give acidic gas, a non-metal oxidized by oxidizing agent to give acid. Next we have how to prepare bases. Let us talk about this. Preparation of bases. इसमें from metals, metal react with oxygen to give metal oxide. Same way, copper react with oxygen to give copper oxide. Even metal oxide can dissolve in water to form metal hydroxide. Same way, aluminium chloride react with sodium hydroxide to give one more base. And even certain nitrate salt which when heated, lead nitrate when heated gives, what does it give? Metal oxide, non-metal oxide and oxygen. So revision, metal react with oxygen to form basic oxide, metal oxide dissolve in water to form an alkali, metal hydroxide. Certain salts also react to give a base and certain salts on heating give basic oxide. So this is how bases are prepared. Next we have is physical properties. Now acids are sour, खट्टे होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, and bases are bitter, caustic alkali like potassium hydroxide solution, like sodium hydroxide solution. These are, now what is indicator test? This will turn moist blue
to red, and this will turn moist red litmus to blue. But remember, indicators do not tell you the strength. Indicators will just tell you whether the solution is acidic. How much acidic, they will not tell. In fact, common acid base indicator like litmus, methyl orange, phenolphthalein, ब्रोमोथाइमॉल, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं ये वीक इंडिकेटर्स हैं, वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दे आर कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स. सो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम बात करते हैं एसिड्स की तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन होता है. एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव salt and water. Next, certain metal react with acid, displace hydrogen to give salt and hydrogen. Now, here what do you follow? Metal activity series. What do we follow? Metal activity series. Suppose you take a chloride salt and react with acid. It will, at less than 200 degrees centigrade, it will give another acidic gas and a salt. If you take sodium carbonate, it will react with acid to give, these are properties of acid, salt, water and carbon dioxide. If you take bicarbonate, sodium bicarbonate, react with acid to give salt, water and carbon dioxide. So a recap, the chemical properties of acid: acid react with base to give salt and water, neutralization. Acid react with active metal to give salt and hydrogen. Acid also react with chloride salts, carbonate salts and bicarbonate salts, respectively giving salts or gases for that matter. Next we have is bases. Now, in bases, you can react an alkali with ammonium salt. Heat is a must. Then only you see that ammonia is evolved. This is an important reaction in terms of heat. If you don't heat it, you will not get this. You will get ammonium hydroxide. I repeat, whenever you need to evolve ammonia from ammonium salt, you need to heat it with caustic alkali. Heat with caustic alkali. In here cases, certain metals are metal salts which can react with alkali. So alkali also give precipitates. Metal hydroxides are characteristic precipitates formed. ऐसा नहीं है कि ये केवल एल्यूमिनियम से होगा. ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन है. इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगा which is an alkali, so it will give copper hydroxide which is a precipitate, pale blue PPT, and sodium sulfate. So these are the properties of alkali with ammonium salt on heating giving ammonia, or alkali with salt giving characteristic colored precipitates. Next we have is uses. आई वॉश के लिए हम लोग यूज करते हैं बोरिक एसिड. एसिड फाउंड इन सॉलिड स्टेट. फूड प्रिजर्वेशन के लिए वी कैन यूज एसिटिक एसिड. इंक स्टेन के लिए वी कैन यूज ऑक्सैलिक एसिड. फ्लेवरिंग ड्रिंक के लिए वी कैन यूज कार्बोनिक एसिड. बेकिंग के लिए वी कैन यूज टार्टरिक एसिड. कुकिंग के लिए अगेन एसिटिक एसिड. Pickling is done by hydrochloric acid. And in this case, for soap you can read sodium hydroxide. For bleaching powder you can use calcium hydroxide. For antacid, जो खाने में जलन होती है, एसिड्स बनते हैं बाइल से, तो उसके लिए हम इनोसॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड.
फोमिंग फायर एक्सटिंग्विशर के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्रीस स्टेन के लिए वी कैन यूज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपकी जानकारी के लिए बताएं, कुछ जगह ऐसी हैं स्पेशली यूरोप जहां पे डिश वॉशर्स होते हैं, डिश वॉशर में अमोनिया डाला जाता है। अमोनिया जो प्लेट में से ग्रीस होता है उसको इमल्सिफाई करके हटा देता है, तो ग्रीस स्टेन कैन बी रिमूव्ड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वी हैव इज in here you can see what is pH. pH stands for power of hydrogen. Suppose this is the concentration of hydronium ion in moles per liter at 25 degree और इसका negative log लिया, negative log to the same base is positive, negative log to the 10 on the same base is positive, negative log to the base 10 on the same base is positive. तो इन दोनों वैल्यू में this is more, this is less, but if you take negative log, this is less and this is more. What is pH? It is defined as negative log to the base 10, negative log to base 10 of hydronium ion concentration in moles per liter at 25 degrees centigrade. Don't miss a single point. Negative log to base 10 of hydronium ion concentration expressed in moles per liter. Next we come to is indicators. What are common acid indicators? Are weak organic compound which change color depending on solution. Common acid base indicator, they only no definite pH, no definite pH, just color change. और यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज होता है विच चेंज कलर इन अकॉर्डेंस विद। मैंने एक बच्चे से पूछा हॉस्पिटल में ग्रीन कर्टेन्स क्यों होते हैं, ऑपरेशन थिएटर की शीट ग्रीन क्यों होती है? बड़ा साइंटिफिक आंसर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, ना ही कम होती है आइस के टर्म्स में, ना ही ज्यादा होती है। अगर कलर आयन में बात करें तो ग्रीन के रिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है इट इज बिटवीन द एक्सट्रीम्स। उसी तरीके से जब आप 10 टू द पावर -1 का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो pH 1 होता है, जब 10 टू द पावर -7 का नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH 7 होगा। तो universal indicator is mixture of organic dyes. If it changes its color to violet, the pH is around 14. Little less violet and then indigo, it is pH is around 12 to 13. If the color changes of dyes to green, then obviously it is a neutral solution, and if it is around red, it is acidic. Next we come to is, you can see here, if you take an acid and you take a common acid base indicator, litmus, blue, moist blue litmus red, moist red litmus blue. If you take methyl orange, it is orange to pink and pink to yellow. If you take only phenolphthalein, now this is very important. If you take phenolphthalein, it does not respond to acid. But if you take alkaline phenolphthalein, it changes from pink to colorless. That means if you make phenolphthalein alkaline, NaOH add करके, तो its color changes to pink from colorless, and pink to colorless, and colorless to pink. Same way, next we have is, what is the uses of pH? Suppose you grow sugar cane. Sugar cane जब आपने grow करी तो हाइड्रोजन बाहर चला गया तो सॉइल हो गई एल्केलाइन। नेक्स्ट क्रॉप जो 6 मंथ बाद होती है उसमें आप पी या ग्राम, मूंगफली, चना कुछ ऐसा उगाते हैं तो OH बाहर चला जाता है और H बढ़ जाता है, तो सॉइल पहले शुगर केन उठाने पे एल्केलाइन हो गई और चना उगाने पे एसिडिक हो गई। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए सॉइल का pH मायने रखता है। क्यों?
क्योंकि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसी तरीके से डेयरी है, मिल्क आपने देखा, मिल्क आपने लिया, बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी होती हैं, वहां पे मिल्क का पीएच लिया जाता है, उसी के बेस पे उसके रेट लगते हैं। मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक, अगर एसिड है पीएच उसका 7 से कम होगा, और अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया तो मिल्क खराब है। उसी तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन में सर्टेन पीएच होता है जो हमारी बॉडी में होते हैं। अगर हम, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर्स की प्रोटीन खाइए, प्रोटीन जब खाएंगे तो आपके बॉडी की जो टॉक्सिसिटी होती है, जो एच आयन होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेम वे मेडिसिन में आप गॉड फॉरबिड आप बीमार हैं, गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर से ब्लड सैंपल, पहली चीज पीएच, पीएच ब्लड का होना चाहिए मोर देन 7, और पीएच आ रहा है लेस देन 7, वो समझ जाता है ब्लड एसिडिक हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में पैथोजेंस हैं, क्योंकि ब्लड इज नेचुरली सपोज टू बी एल्केलाइन। उसी तरीके से जब हम पानी पीते हैं तो पानी न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल है, तो पहले वो हमारी बॉडी में एल्केलाइन होगा ऑर्गन्स में, फिर जब एल्केलाइन हो जाएगा, ब्लड के पीएच में बराबर हो जाएगा, तब वो ब्लड में मिक्स होगा। इसीलिए कंपनी नए नए कॉन्सेप्ट कर रही हैं, कोई धोनी कोई पानी पी रहे हैं, विराट कोहली कोई पानी पी रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो एक्चुअली वही पानी है जिनमें आपके ब्लड के बराबर के मिनरल्स एंड पीएच हैं। और जो नॉर्मल पानी हम लोग पीते हैं, नॉर्मल लोग मतलब नॉट द सेलिब्रिटी वंस, तो वो वाटर न्यूट्रल होता है, और वही बॉडी में पहले चेंज होगा एल्केलाइन में, फिर ब्लड में मिक्स होगा। नेक्स्ट वी कम टू इज पीएच वैल्यू ऑफ सर्टेन केमिकल। देखो 1 से बढ़ रहे हैं, फिर ये एसिड्स हैं और ये बेसिस हैं। तो देखो लैक्टिक एसिड मिल्क है, लैक्टिक एसिड इज मिल्क, तो मिल्क थोड़ा सा एसिडिक है, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो जो मिनरल एसिड है उनका पीएच 1-2 है, 1 है, 1.2 है, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड है उनका पीएच 7 के आसपास है। सेम वे जिनका पीएच 13 और 11 है ये एल्केलीज हैं, और जैसे ह्यूमन ब्लड है थोड़ा सा एल्केलाइन है, वाइट ऑफ एग है वो भी थोड़ा एल्केलाइन है, सी वाटर, प्योर वाटर का पीएच 7 है, लेकिन सी वाटर थोड़ा सा एल्केलाइन है। इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन कोई बने तो बन जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू इज सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट वो कंपाउंड है जो एसिड के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट या कंप्लीट, अगर दोनों हाइड्रोजन हट गए तो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, मोर देन 200 मोर कंसंट्रेशन, और अगर लेस कंसंट्रेशन है तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड्स बाय बेसिक रेडिकल। तो लिखें फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट of hydrogen ion of acid by basic radical. If hydrogen is displaced partially, it will form acidic salt. If it is displaced completely, it will form normal salt. Next we have is निमोनिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर ध्यान से देखिएगा, 2 आयन का बेस बना लें, है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर से देखिए, फिर से देखिए, एसिड इज अ कंपाउंड विच हैज हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड OH नॉट इन नेगेटिव, HCl. Base is a compound which does not have hydrogen but always has OH as negative. Salt has neither hydrogen nor hydroxyl. It is salt. When you have both, it is water. And this is nothing but neutralization. Acid react with base to give salt and water. What is neutralization? Acid react with base to give salt and water. This is how, this is mnemonic way of learning
in your own method. Let us see next. Now, types of salt. This is quite interesting. Types of salt में you can see acidic, normal, basic, double, mixed and complex. या तो मैच द कॉलम आता है या एमसीक्यू आता है. सारे सॉल्ट हैं, सारे नेम हैं, सॉल्ट के टाइप और नेम आपको मैच कराने हैं. या विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो उसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, आपको पहचानना होगा. तो देखिए कैसे पहचानेंगे. हम पहले एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं. अब यू कैन सी सल्फ्यूरिक एसिड हैज 2 हाइड्रोजन. If you displace one hydrogen by basic radical, then it changes to a salt having displaceable hydrogen ion, right? So partial replacement of hydrogen ion of acid by basic radical. That means hydrochloric acid will not form acidic salt because it has only one displaceable hydrogen ion. But sulfuric acid and phosphoric acid will make 2 acidic salt. One NaH2PO4 and another Na2HPO4. बट इसके अलावा सॉल्ट में, एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन होना जरूरी है. नेक्स्ट वी कम टू इज नॉर्मल सॉल्ट. इन नॉर्मल सॉल्ट यू कैन सी, व्हाट डू यू सी? इन नॉर्मल सॉल्ट formed by complete replacement of hydrogen ion. So this is HCl, all the hydrogen displaced by metal. This is H2SO4, all the hydrogen is displaced by metal ion. This is H3PO4, so all the hydrogen is displaced by metal. So this is a normal salt. This is a normal salt. इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 तरीके के सॉल्ट बनते हैं. एक एसिडिक सॉल्ट बनता है विच इज एसिडिक, और दूसरा नॉर्मल सॉल्ट बनता है विच इज नॉर्मल. दिस क्वेश्चन हैज कम lot many time. Which among the following acid will make 2 kind of salt? Sulfuric acid will make 2 kind of salt. Even phosphoric acid will also make 2 kind of salt. Next we have is basic salt. Now in basic salt, what do you see? Let us see. In basic salt, you have, for example, calcium hydroxide. You have 2 hydroxyl ion. One negative ion is displaced by acidic radical. So you have calcium losing 2 electron, one going to OH and other going to another chloride. So salt having a displaceable hydroxyl ion, or salt formed by partial replacement of OH ion by acidic radical. Chloride ion is a acidic radical. So salt formed by partial displacement of hydroxyl ion by acidic radical is a basic salt. Now in this case, let us see double salt. Now what do you mean by double salt? Let us see. Double salt क्या होते हैं? Salt formed by cooling a saturated solution of 2 salt. Suppose you have taken saturated solution of potassium sulfate, aluminium sulfate, और उनके सॉल्यूशन को आपने सॉल्यूशन को कूल कर लिया, तो यू विल फॉर्म डबल सॉल्ट. पोटैश एलम, फिटकरी, पोटैश एलम, फिटकरी. इसमें खास बात यह है कि इट हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दूसरी खास बात यह है कि जो पहली मेटल है वो यूनी पॉजिटिव होगा और जो दूसरी मेटल है वो ट्राई पॉजिटिव होगा. ये हमेशा होता है. इसी तरीके से क्रोम एलम भी बनती है. क्रोम एलम में अमोनियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट होता है और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जरूर होगा. दिस इज actually in Hindi we call it fitkari. It is used as a very good coagulating and a disinfecting agent. Next we have is
मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है, मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है, या तो दो बेसिक रेडिकल है, फॉर एग्जांपल सल्फेट नीड 2 इलेक्ट्रॉन, one given by sodium and another given by potassium. So this is a mixed salt. For example, calcium is losing 2 electron. One is taken by oxychloride and other taken by Cl. So it becomes bleaching powder. What is this? So bleaching powder is a mixed salt. Bleaching powder is a mixed salt. Either it has two basic radical or it has two acidic radical. Next we have is complex salt, and this complex salt ये भी saturated solution से बनते हैं, formed by mixing saturated solution of two salts, but इसमें tetraamine कॉपर रोमन 2 सल्फेट, इसमें एक सिंपल आयन होता है, ये सिंपल आयन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। दूसरा ले सकते हैं K4FeCN6, इसमें पोटेशियम आयन सिंपल आयन है एंड हेक्सासाइनोफिरेट कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय square bracket. Next we have is, this is quite interesting. ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं अगर किसी भी चैप्टर को पकड़ना है, खास तौर पे सॉल्ट कंटेनिंग चैप्टर को, तो ये आना चाहिए। हायर क्लास में इसको आईपी और केएसपी के बेस पे हम लोग देखेंगे। 12th क्लास के वीडियोस आप लोग 11th क्लास के वीडियोस देख सकते हैं कि सॉल्ट का प्रेसिपिटेट कब बनता है और कब नहीं बनता है। तो जो सॉल्ट soluble होते हैं या either they are insoluble. All the nitrate, nitrite salt are soluble in water. All sodium, potassium and ammonium salts are soluble in water. All chlorides are soluble except lead chloride, mercury chloride and silver chloride, and this is soluble in hot water. All bicarbonates are soluble except sodium bicarbonate, potassium bicarbonate. These are insoluble. All sulfates are soluble except lead sulfate, barium sulfate and silver sulfate. Again I am repeating, all nitrate, nitrite are soluble. All potassium, sodium, ammonium salts are soluble. All chloride salts are soluble except lead, mercury and silver. All bicarbonates are soluble except sodium and potassium. All sulfate are soluble except lead, barium, calcium and silver. अब insoluble salts में all sulfide other than sodium, potassium, ammonium. All sulfite other than these three. All carbonate other than these three. All are insoluble other than these three. सपोज आप कहें पोटेशियम फॉस्फेट, नो, पोटेशियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल हैं। आप कहें सर अमोनियम सल्फेट, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। सो ये और ये खेल बनाएंगे सॉल्युबल के लिए, और ये और ये तीनों खेल बनाएंगे इनसॉल्युबल के लिए। मेरे को अगर मौका मिले इस स्लाइड में से मैं इन चार चीजों का पेपर बनाऊंगा जरूर। एक क्वेश्चन, नेम अ क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। lead chloride. Which is odd one out? Lead sulfate, barium sulfate, calcium sulfate and potassium sulfate. Potassium sulfate is soluble, rest all sulfates, barium, calcium, barium, lead and calcium. Barium, lead and silver are Libacasi. Calcium sulfate is also insoluble. और चार सल्फेट इनसॉल्युबल हैं, बाकी सारे सल्फेट सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट वी कम टू इज हाउ टू प्रिपेयर सॉल्ट। ये बड़ी एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता ही है। मैंने स्लाइड बना दी है और मैंने हर पेज पे इसको कॉपी किया है। कारण है
जिससे कि आप रेफर कर पाए। तो जो वाटर सॉल्युबल है उसका जो पहला मेथड है वो है कॉम्बिनेशन। हीटेड आयरन, ड्राई क्लोरीन, it will form a deliquescent soluble salt. Iron should be heated, chlorine should be dry. This is combination. This is deliquescent in nature. If you dissolve it in water, it will make a solution because only lead, mercury and silver chloride are insoluble in water. Rest all the chlorides are soluble. So ferric chloride is a deliquescent salt which is soluble in water. So salt बनाने की, soluble salt की combination का ये example है. Condition: heated iron, dry chlorine. What is the nature of ferric chloride? It is deliquescent in nature. Deliquescent substances are those crystalline soluble substances which when exposed to atmosphere absorb moisture and changes to liquid. Deliquescent salt. Next we come to is simple displacement. अब इसमें simple displacement में more reactive substance displace the other from its compound. So it will give, what do you follow here? You follow, what do you follow? Metal activity series. What do you follow? Metal activity series. इसमें सीधा सा क्वेश्चन बनता है, if you react iron with dilute hydrochloric acid, iron is more reactive than hydrogen, it will make iron 2 chloride and hydrogen. नोट करिए, फेरिक क्लोराइड आपने बनाया था कॉम्बिनेशन से, लेकिन फेरस क्लोराइड आप बना रहे हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट से. दिस इज पॉसिबल. जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. नोट करिए, दिस इज सॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल. जिंक सल्फेट इज नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर. यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड. Not on this, see on this. Sulfate of zinc is not here, it is soluble. So next we have is, but this reaction is not possible. Copper cannot displace hydrogen. So this is not possible. Why? Because copper is below hydrogen in metal activity series, whereas zinc and iron are above hydrogen in metal activity series. Next we come to is neutralization. Now, one more thing I forgot to remind here. Let us see. In synthesis or combination, it is metal with non-metal giving soluble salt. This is how you learn. Synthesis oblique combination. Synthesis oblique combination, metal with non-metal gives a soluble salt. Next, in simple displacement, metal react with acid to give soluble salt. ये भी याद हो गया. Simple displacement, metal react with acid to give soluble salt. Next we have is neutralization. In neutralization, insoluble compound react with acid to give soluble salt. Now solubility is very important. Copper oxide is insoluble. Copper carbonate is also insoluble. Copper hydroxide is also insoluble. This react with acid to give copper chloride is soluble compound. Copper carbonate react with nitric acid to give salt. All nitrate are soluble to give salt water and carbon dioxide. Copper hydroxide react with sulfuric acid. It will give copper sulfate and twice water. Now you see, copper sulfate is soluble. Only lead, barium, calcium, silver sulfate are insoluble. Copper nitrate, all nitrate salts are soluble.
कॉपर क्लोराइड, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड, मरकरी एंड सिल्वर। याद करने का तरीका, न्यूट्रलाइजेशन में इकास, insoluble compound with acid giving soluble salt, ikas. Then next we have titration. Next we have is titration. So in titration, what do you do? Sakas, soluble compound with acid gives soluble salt. ये भी डबल डिकम्पोजिशन है। कैसे देखें, soluble compound with acid gives soluble salt. All sodium salts are soluble in water. This is soluble compound. Soluble compound, all ammonium salts are soluble in water. Soluble compound with acid gives a soluble salt. All ammonium salts are soluble in water. Next we have one more. You can take potassium oxide, which is soluble, react with acid to give soluble salt and water. Yes or no? See, soluble compound with acid giving soluble salt. So this is T-Sakas, titration. Now what is the difference between neutralization and titration? Despite both being double decomposition, in this you make soluble salt from insoluble compound. But in this titration, you make soluble salt from soluble compound. This is the basic difference which teacher are not able to. They only say double decomposition, it is same. No, it is not same. When you make soluble from soluble, it is titration. But when you make soluble from insoluble to soluble, it is neutralization. From insoluble to soluble, it is neutralization. From soluble to soluble, it is titration. Both are double decomposition, both use acid. Now we come to insoluble. Now, this is quite interesting. क्या खास है? This and this are common. But this is soluble, ferric chloride. This is insoluble. Heated lead, molten sulfur. It will give lead sulfide, and lead sulfide is insoluble. Heated zinc with molten sulfur will give zinc sulfide, which is insoluble. Incidentally, combination और synthesis है, दोनों टेक्निक ऐसी हैं जिनसे soluble salt भी बनता है और insoluble भी बनता है. तो देखेंगे कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस से हम दोनों सॉल्ट बनाते हैं, soluble भी बनाते हैं और insoluble भी बनाते हैं. तो इसमें लिख ले synthesis metal with non-metal giving insoluble salt. Metal with non-metal giving insoluble salt. तो याद करने का सिंथेसिस दो जगह है, एक यहां है सिंथेसिस मेटल विद नॉन मेटल मंथ्स और सिंथेसिस मेटल विद नॉन मेटल insoluble, manis and months. This is quite interesting. Now the last one is precipitation. This is also, इसको याद करने का तरीका है P to kiss. दो soluble compound giving one is insoluble and one soluble. Let us see. Lead nitrate, all nitrate are soluble. Sodium chloride, all sodium salt are soluble. एक insoluble बन रहा है और एक soluble बन रहा है. So insoluble salt prepare from two soluble compound, one insoluble and one soluble. आप दूसरा ले सकते हैं. कॉपर सल्फेट soluble है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी soluble है. इससे पेल ब्लू प्रिसिपिटेट बन रहा है which is insoluble. तो नोट करिए, insoluble compound made from two soluble compound, ये रहा याद करने का तरीका.
अब इसकी समरी बना लें। सॉल्युबल में सिंथेसिस मेटल विद नॉन मेटल गिविंग सॉल्युबल सॉल्ट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मास मेटल विद एसिड गिव सॉल्युबल सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन insoluble compound with acid gives soluble salt, titration soluble compound with acid gives soluble salt। अब insoluble compound में synthesis metal with non metal giving insoluble salt and precipitation में to kiss two soluble compound giving one insoluble and one soluble compound। अगर मेरी चले तो इसमें से भी मैं कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दूं आईसीएसई में और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको सीबीएसई में दूं। और आज के लिए यही काफी है। बहुत जल्द आपको फिर से एक क्वेश्चन दूंगा, एक टॉपिक मेटलर्जी पे मैं डिस्कस करूंगा जिसमें आपको हॉल हेरोल्ड, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, एलॉयज, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन बाय थर्मल डिकम, वो सब भी आपको बहुत जल्दी दूंगा। वी आर स्टिल वार्मिंग अप। थैंक यू।